Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is the last lecture of Sir Philip Sidney's An Apology for Poetry or the Defense of Poetry. And in this lecture, we will talk about Sir Philip Sidney's views on tragedy and comedy. Mainly, the discussion will be concerned with the lack of unities and mixing of comedy and tragedy. By the lack of unities, as you know, unities refer to the unity of place, unity of time, and unity of action, and mixing of the tragedy, as are the Shakespearean tragedies, in which you have the mixture of comedy and tragedy, that is tragicomedy. So these two things will be discussed in detail. We know that when Sir Philip Sidney lived, the drama of that age was not in a very good condition. He himself was the child of Renaissance, which means that he loved Renaissance characteristics, like he followed Greeks and Romans and he admired them and loved them and followed them. But the plays of the time were based on scenes of violence, bloodshed. There were violent passions staged, and the speeches in the dramas were very bombastic speeches, which means that they had empty speeches in them, meaningless, though the words used were very great, but there was nothing in them. As far as the plot construction is concerned, those dramas had weak plots. The plots were not well knit because there were many incidents which could be removed without any damage to the story, and as a result, there were superfluous incidents. There were also the lack of unities, and there was the mixing of comedy and tragedy. Now we'll discuss this point in a little detail. You already know that Aristotle, in his Poetics, he emphasized only one unity. That unity was the unity of action, that the action should be one complete whole, having beginning, middle, and end, and the action should not have such incidents which are superfluous and which are not causal. So this was his idea. He mentioned the unity of time by saying it should be one revolution of the sun. They thought that the sun revolves around the earth, and by one revolution of the sun he meant 24 hours, that a drama should cover a time of 1 day. So therefore, unity of time. There should be one action, therefore unity of action. Unity of time was not emphasized. The one which Aristotle emphasized was the unity of action. Aristotle did not mention the unity of place, that is, the whole drama should occur in one place, that is, the background or the place where the drama takes place should be one place, not different places. However, later commentators, they said that Aristotle had said so, that there must be unity of action, unity of time, and unity of place, and they said so on the authority of Aristotle. Though Aristotle had not emphasized all the three unities, he emphasized only the unity of action. Sidney accepted this view of the unity of action, time, and place, and he accepted this because he thought that if these three are followed, then there will be a kind of verisimilitude in the drama, which means the appearance to the true or to the reality. So if these three unities are present, Sidney thought that it would look real, and therefore it will have a verisimilitude. Based on this idea that it would look real, he accepted this later view of the commentators, and he thought that the stage must appear as real as possible, and if it isn't real or it doesn't look real,
then the tragic emotions will not be aroused. So unities are important, but the dramas of his age, according to him, did not have unities. They did not have the unity of place. For example, in one scene you would see a garden. In the other scene you will see a battlefield. And in yet another you'll see even the sea, the ships. Now if these scenes keep on changing, the place keeps on changing, then our sense of reality is strained, and it is very hard for us to believe that this is like real. It would not look like reality, it would look artificial, and it would look absurd and ridiculous, and therefore this unity of place is important to be followed, but it was not followed at the time of Sir Philip Sidney. Next is the unity of time, which he thinks was not followed then, because unity of time means one revolution of the sun, that is, it should cover 24 hours, while in the dramas of the time, the hero would be born in one scene, in another scene he becomes young, and in the next scene a father, after falling in love with a woman, and yet another scene you find him as an old man. So all this refers to the lack of the unity of time, which is quite incredible to happen on a stage, and therefore the tragic emotions are not aroused. There isn't a complete dramatic illusion. So this is what he says about the unity, the unities, 3 unities. ये इसको उर्दू में सुन लें. हमने ये कहा कि ये लास्ट लेक्चर है सर फिलिप सिडनी के एन अपॉलजी फॉर पोइट्री का, जिसको डिफेंस ऑफ पोइट्री भी कहते हैं, और ये उसकी वीव्स हैं ट्रेजेडी के बारे में और कॉमेडी के बारे में. मेनली हम उसने जो डिस्कस किया है 3 यूनिटीज़ को डिस्कस किया है, जिससे मुराद है यूनिटी ऑफ प्लेस, यानी तमाम ड्रामा एक मुकाम पर होना चाहिए. यूनिटी ऑफ टाइम, तमाम ड्रामा एक दिन से ज़्यादा अरसा कवर ना करे. और यूनिटी ऑफ एक्शन, तमाम ड्रामा कंप्लीट होल एक्शन पर मुश्तमिल हो. तो ये इन 3 यूनिटीज़ का ख़ास तौर पर जिक्र है. इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जब सर फिलिप सिडनी मौजूद था तो उस ज़माने में ड्रामे की हालत डिप्लोरेबल थी, ख़राब थी, और वो ख़ुद रेनेसेंस का बंदा था. रेनेसेंस एक एज गुज़रा है जिसमें मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मसलन लव फॉर द ग्रीक्स एंड रोमन्स, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है. लव फॉर नॉलेज, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है. लव फॉर मनी, ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है. और इससे बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस एज की, और इस एज को रेनेसेंस एज कहा जाता है. ये एक अलग से टॉपिक है जो कि हमारा टॉपिक फ़िलहाल नहीं है. हम ये कह रहे हैं कि सर फिलिप सिडनी एक रेनेसांस का बंदा था. उसको ग्रीक रोमन राइटर पसंद थे, उन्होंने जो काम किया था वो पसंद था, लेकिन इस वक्त के ड्रामों में वो काम नहीं था. मसलन इस वक्त के ड्रामों में वायलेंट सीन होते थे, ब्लड शेड के, खून खराबे के, वायलेंट पैशंस, शदीद किस्म के इमोशंस, और वो स्पीचेस जो कि खाली स्पीचेस हों, बेमानी हों, अगरचे वो लगें कि बड़ी ज़बरदस्त हैं, और प्लॉट कंस्ट्रक्शन भी अच्छे नहीं थे. यानी उसमें ऐसे इंसिडेंट्स होते थे जिसको आप आसानी से हटा सकते थे, इसको सुपरफ्लोस इंसिडेंट्स कहते हैं. ख़ास तौर पे उसमें 3 यूनिटीज़ नहीं थी जो कि इसके ख्याल में होनी चाहिए. असल में अगर हम अरिस्टोटल को पढ़ें, जैसे आप पढ़ चुके हैं पोएटिक्स में, तो अरिस्टोटल ने तो सिर्फ एक यूनिटी पर जोर दिया है, और वो है यूनिटी ऑफ एक्शन, जिसका उसने कहा है कि कंप्लीट होना चाहिए, होल होना चाहिए, बिगिनिंग मिडल एंड इसमें होना चाहिए,
और सुपरफ्लुअस इंसिडेंट्स इसमें नहीं होने चाहिए, इस पे जोर दिया है। यूनिटी ऑफ टाइम का उसने सिर्फ जिक्र किया है और कहा है कि ये एक दिन से ज़्यादा टाइम कवर ना करे, वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। और यूनिटी ऑफ प्लेस का तो उसने सिर्फ इससे जिक्र नहीं किया। लेकिन बाद में जो कमेंटेटर्स आए अरिस्टोटल पर, तो उन्होंने कहा कि यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस ये सब ड्रामे में ज़रूरी है। और उन्होंने ये इस अथॉरिटी पे कहा कि ये तो दरअसल अरिस्टोटल कह चुका है। सर फिलिप सिडनी ने इसी आइडिया को कबूल किया है इस बुनियाद पर कि अगर ये तीन यूनिटीज़ होंगी तो ये असल लगेगा, रियल लगेगा और नकल नहीं लगेगा, और इस पर यकीन करने में आसानी होगी क्योंकि स्टेज को रियल नज़र आना चाहिए। तो तब ट्रेजिक इमोशंस अराउज होंगी, जो कि पर्पस ऑफ ट्रेजिडी है। अगर यूनिटीज़ वगैरह ना हो तो फिर ये अराउज नहीं होगी, और ज़माने के ड्रामे में नहीं थी। एक सीन में आपको बाग दिखाया जाता था, दूसरे सीन में मैदान जंग दिखाया जाता था, तीसरे सीन में समंदर और शिप्स दिखाई जाती थी। और इसको बिलीव करना हमारे लिए ये क्रेडिबल नहीं था। हाँ, ये स्ट्रेन करता था, बोझ डालता था हमारे इसको रियल समझने। तो ये आर्टिफिशियल लगता था और मज़ाक का खेज और बेकार लगता था। ये तो यूनिटी ऑफ प्लेस की बात हुई। यूनिटी ऑफ टाइम भी नहीं था उसमें, क्योंकि एक सीन में हीरो पैदा होता है, दूसरे सीन में जवान हो जाता है और मोहब्बत में गिरफ्तार होता है, नेक्स्ट सीन में शादी होती है, वो फादर बनता है, और अगले सीन में बूढ़ा हो जाता है। ये बिल्कुल नाकाबिले यकीन है उसके मुताबिक। लिहाजा ट्रेजिक इमोशंस ये अराउज नहीं होगी और इसमें कंप्लीट ड्रामेटिक इल्यूजन नहीं होगा अगर यूनिटी ऑफ टाइम नहीं होगा। तो दो यूनिटीज़ का हमने जिक्र किया, यूनिटी ऑफ प्लेस का यहाँ पर और यूनिटी ऑफ टाइम का यहाँ पर। यूनिटी ऑफ एक्शन का हम इसके बाद जिक्र करेंगे। Next, he gives us some suggestions how to improve drama, and in this discussion, we will find out his theory of tragedy too. You know about the his theory of poetry. We discussed it uh, in the live classes, and we said that his theory of poetry is eclectic. We now will discuss that his theory of tragedy is also eclectic, which means that he has created a kind of theory which is a mixture of different writers and different ages, and he gives different suggestions to improve that tragedy, and these suggestions can be considered as his theory of tragedy. So if a question comes on his theory of tragedy, then you write all this. The first suggestion he gives is that tragedy must be about the fall of a tyrant. Tyrant means a cruel king or a cruel man who is who is on a key position, and the whole tragedy should prove to us the uncertainty of life, that life is uncertain, it is very short, and it should be lived by doing good deeds, and you should not be a tyrant, and if you are a tyrant, then you must suffer, and this tragedy is about the fall of that tyrant, that cruel king or cruel man who is in the driving seat. So this is, you see, the purpose of tragedy, to arouse it should be about the fall of a tyrant, and it should prove the uncertainty of life. Now, if we talk about this function of tragedy, we find out that this is not an Aristotelian idea. This is not a Roman idea too. Neither is it a Shakespearean idea about tragedy, because Aristotle has already said that the function of tragedy is to arouse pity and fear.
and then to have the catharsis of these emotions. Um, Shakespeare said the same thing almost, though he mixed comedy and tragedy. But no one said that it is about the fall of a tyrant and that it should talk about the uncertainty of life. This idea was taken from medieval ages. So, as I said, his theory of tragedy is eclectic. This is the first element, and this first element has been taken from medieval age. Medieval age is referred to 5th century to 15th century. This is called medieval ages or middle ages, as you have studied in poetry, etc. This was a typical religious attitude, and it's a kind of moral attitude he is taking into account. Therefore, this is not found in Aristotle's view or Roman's view or Shakespearean's view. This is the first suggestion, that it should be about the fall of tyrant. It should give information about the uncertainty of life. The second suggestion is that tragedy should have dignified speeches in it. Stately speeches mean dignified, honorable speeches in the manner of Seneca. Seneca was a dramatist, a Roman dramatist, also a philosopher and statesman, and he wrote dramas in which there were dignified and stately speeches. So Sir Philip Sidney thinks that there should be stately speeches in the drama based on the dramas of Seneca. This view again is taken from an Italian Renaissance critic named Scaliger. So that's why we call this theory of tragedy as eclectic. This is the second element, and the second element of having stately speeches is taken from Scaliger. The third is the function of tragedy, which he thinks that tragedy should arouse admiration and commiseration. You know the meaning of admiration? Admiration means praise, and commiseration means sharing grief. If someone is suffering from grief and you feel pity for him, you are commiserating with him, and there should be admiration for the one who is falling for the hero. This again is not an Aristotelian idea, because Aristotle never said this. Aristotle had said in his Poetics that it should arouse pity and fear, and then the catharsis of these emotions. This idea of arousing admiration and commiseration is taken from an Italian critic called Minturno. This is not the actual pronunciation. The actual pronunciation is a little different. For example, if you click it in Google, it says Minturno. It's a little different. But anyhow, you can say it's Minturno. So this is the third element in this eclectic theory of tragedy. The next element is taken from Italian Renaissance critic called Castelvetro. Again, the pronunciation, the actual pronunciation is not like this, the Italian or the Latin pronunciation. Sidney tells us that there should be three unities. Unity of time, that is, it should be one revolution of the sun. It should cover 24 hours. And the unity of place, the whole action should take place in one place, and the unity of action. And these things were taken from Castelvetro, an Italian critic. So this is that next again. Now comes the plot construction. This is purely Aristotelian, because just like Aristotle, Sir Philip Sidney tells us that a plot should have a beginning, middle, and end. This was something told by Aristotle. So this has been taken from Aristotle. That's why we say his theory of tragedy is eclectic. This is what we mean by eclectic. Then comes the discussion about where this story should come from. The story of the drama. It should come from history books or from legends described in different books. But when you read the history books, you know that in the history books, the
incidents are arranged chronologically. Chronologically means according to the time sequence. First thing comes first. This is called chronology. Therefore, the playwright should take the liberty and he should select and reject. For example, if some incident is not of his use, he can reject it. If some incident is of his use, to select it. There should be that liberty given to the writer, to the playwright, to the dramatist. And then there is another liberty that the episodes can be rearranged. If something has happened earlier, it can be divulged or shown later, keeping the audience in suspense. And if there isn't any incident of his use in the legend or in history, then he should invent an incident. So this can also happen. And the last thing, it should have poetic justice, which we have discussed, which means that good should be rewarded towards the end of the drama and evil should be punished, and it should be done proportionately according to the good or to the bad deed done. So this is his idea or his theory of tragedy. इसको ज़रा उर्दू में भी सुन लें. उसके सजेशंस, तजावीज़ ट्रेजडी के बारे में 4-5 तजावीज़ हैं. पहली तजवीज़ ये है कि ट्रेजडी में किसी जालिम बादशाह या किसी जालिम लीडर का फॉल रिप्रेजेंट करना चाहिए, उसका डेथ या नाकामी रिप्रेजेंट करनी चाहिए, और रीडर को ये चीज़ दिखानी चाहिए कि देखो दुनिया जो है ये गैर यकीनी जगह है, ये आर्जी जगह है, और ये यहाँ से हमें एक दिन जाना है. तो ये जो फॉल ऑफ ए टेरन और अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है, ये ना तो अरिस्टोटल की बात है, ना रोमन लोगों की बात है, और ना ये शेक्सपियर की बात है, बल्कि ये मिडिल एजेस से लिया गया है. मिडिल एजेस से मुराद है 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक. और जो मिडिल एजेस हैं उसमें लोग रिलीजियस थे क्रिश्चियनिटी के हवाले से, और उनका ख्याल ये था कि किसी भी ट्रेजिडी में फॉल ऑफ टेरेंट शो करना चाहिए और अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ शो करनी चाहिए. लिहाजा ये एलिमेंट मेडिवल एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट हुआ. दूसरी तजवीज़ और दूसरा एलिमेंट स्कैलेजर से लिया गया है. ये इटालियन रेनेसेंस क्रिटिक था, और इसका ख्याल ये था कि किसी भी ड्रामे में ज़बरदस्त स्पीचेस, सेट स्पीचेस होनी चाहिए, और ये स्पीचेस सेनेका ने जो ड्रामे लिखे हैं, ड्रामेटिस्ट का नाम है, उन ड्रामों की बेस पर होनी चाहिए. उसके ड्रामों में भी डिग्निफाइड स्पीचेस होती थी, और ये एलिमेंट स्कैलेजर से लिया गया. तो ये एक नेक्स्ट एलिमेंट है इस थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में. तीसरा एलिमेंट ये है कि इसका फंक्शन ये होना चाहिए कि ये एडमरेशन, तारीफ उबारे आपके अंदर लीडर की या हीरो की, और कमिजरेशन कि आप उसके साथ हमदर्दी का इजहार करें कि ओहो ये बंदा, इसमें एक खामी थी, इसकी वजह से तबाह हुआ है. ये एडमरेशन और कमिजरेशन वाली बात भी अरिस्टोटल की नहीं है, बल्कि ये एक इटालियन क्रिटिक से ली गई है, और इसका नाम मेंटर्नो था. तो ये इस वजह से एक्लेक्टिक है. नेक्स्ट एलिमेंट कैस्टेलवेट्रो से लिया गया है. ये इटालियन क्रिटिक था, और इसने 3 यूनिटीज़ की बात की थी. यूनिटी ऑफ प्लेस, ये सब कुछ एक जगह पे होना चाहिए. यूनिटी ऑफ टाइम, 24 घंटे में होना चाहिए. यूनिटी ऑफ प्लेस, एक जगह में होना चाहिए, और एक्शन एक होना चाहिए. सो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस, एक्शन, ये थे. और ये यूनिटीज़ की बात आपको बताया, अरिस्टोटल ने सिर्फ एक यूनिटी का जिक्र किया था, दूसरी यूनिटी का एक पे जोर डाला था, दूसरे का जिक्र किया था, और तीसरे का, प्लेस का, उसमें जिक्र ही नहीं है. तो ये कैस्टेलवेट्रो से लिया गया है. नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो प्लॉट के बारे में है. प्लॉट में बिगिनिंग, मिडल एंड एंड होना चाहिए, और ये अरिस्टोटल का, ये कंप्लीट होना चाहिए, होल एक्शन होना चाहिए. यह हमारा अरिस्टोटेलियन एलिमेंट है, वहाँ से लिया गया है.
जो प्लॉट है, कहानी है, ये लेजेंड से आप ले सकते हैं और हिस्ट्री से ले सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री से आप लेंगे तो इसके इंसिडेंट्स क्रोनोलॉजिकल होंगे, वक्त की तरतीब से होंगे। प्ले राइट को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो कुछ इंसिडेंट सेलेक्ट करे, कुछ रिजेक्ट करे, कुछ स्किप करे, और वो रीअरेंज भी कर सकता है एपिसोड्स को। आप रीडर्स में या वॉचर्स में, ड्रामा के जो ऑडियंस हैं उनमें सस्पेंस पैदा करने के लिए वो रीअरेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं है कोई इंसिडेंट के काम का तो इन्वेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट ये है कि गुड रिवार्ड होना चाहिए, बैड पनिश होना चाहिए। इसको कहते हैं पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस भी एरिस्टोटेलियन आइडिया नहीं है, न ये शेक्सपियरियन आइडिया है, और इसका मतलब ये है कि अच्छे को रिवार्ड मिले और बुरे को पनिशमेंट मिले। दिस वाज ऑल अबाउट हिज आइडिया ऑफ ट्रेजिडी। ये सारी डिस्कशन ट्रेजिडी की हुई कि ट्रेजिडी जो है उस ज़माने में ठीक नहीं थी, उसमें यूनिटीज़ नहीं थी, उसमें कॉमेडी ट्रेजिडी को मिक्स किया गया था, और इसकी थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी की बात हुई। अब हम बात करेंगे his ideas about comedy. He talks about comedy by telling us that in his age, comedy has become very cheap and vulgar. Vulgar because, as we said, that the type of comedy which is delivered in those dramas is not refined. Something is refined when it is attached with educated persons. Something is not cheap when it is attached with educated persons. So that drama, according to him, it arouses laughter, but it doesn't arouse your delight. Now, something which arouses your laughter is not an intellectual comedy. Intellectual comedy is the one which arouses your delight. So therefore, he gives us a distinction, a difference between laughter and delight. Sidney thinks that delight is the result of harmony. When you look at harmonious things, at regular things, you are delighted, and this is something permanent. Laughter is aroused when you look at something disharmonious, something irregular, and it is temporary. The examples are clear. For example, if you look at something pretty, let's say a pretty woman, your laughter is not aroused. You don't laugh at a pretty woman. Your delight is aroused and you are delighted. But if you look at a short, fat man walking side by side with a tall, thin man, this is a kind of disharmony and our laughter is aroused. Again, if somebody slips on a banana skin, once again we start laughing, laughter is aroused, but our delight is not aroused there. So sometimes both are combined, and this he considers would be the best type of play in which delight and laughter are combined, and he gives the example of Hercules. Hercules was a man of great strength and great bravery, valor, and he did a lot of difficult things. He performed physical feats, feats of strength. Then he fell in love with a lady, and the lady demanded that she would reciprocate her love only if this man, Hercules, he wears a woman's dress and starts knitting. I see both these things are women's things, quite contrasted with valor and bravery, and he agrees. In this sense, our laughter is aroused. But at the same time,
we also have an insight and understanding of the nature of love. We come to know that for love, many good, valorous, and chivalrous, brave people would do things which are quite ridiculous. For example, wearing a woman's dress and knitting, which are women's things, and contrasted with bravery. Therefore, we find delight in this case and laughter in this case. So these are the two examples. ये अभी उर्दू में सुन लें तो भाई ये ख़त्म हो जाएगा. कॉमेडी के बारे में उसका ख्याल ये है कि उस ज़माने की कॉमेडी चीप और वल्गर थी. चीप और वल्गर से मुराद ये है कि उसमें हल्ला गुल्ला ज़्यादा था और इंटेलेक्चुअल एलिमेंट कम था. उसको इंटेलेक्चुअल कॉमेडी की. इंटेलेक्चुअल कॉमेडी से मुराद वो कॉमेडी है जिसमें मार कुटाई वगैरह ना हो और अनसोशल इंसिडेंट्स ना हो, बल्कि ऐसी चीज़ें हों जिसको तालीम याफ्ता लोग करते हैं और उससे डिलाइट अराउज हो, न कि लाफ्टर सिर्फ अराउज हो. तो वो हमें लाफ्टर और डिलाइट में फ़र्क बताता है कि डिलाइट जो है ये हारमनी, हम आहंगी की वजह से होता है, परमानेंट चीज़ है. लाफ्टर गैर हम आहंगी से होता है, टेम्परेरी चीज़ है. मसलन अगर आप एक प्रिटी वुमन देखते हैं तो ये लाफ्टर अराउज नहीं करता, आप उसमें हंसते नहीं, ये डिलाइट आपका अराउज करता है. लेकिन अगर आप एक बहुत मोटे आदमी को एक बहुत पतले लंबे आदमी के साथ चलता हुआ देखते हैं तो आपका लाफ्टर अराउज होता है, क्योंकि ये डिस हारमोनियस है. और अगर कोई बंदा बनाना स्किन पे स्लिप होता है तो तब भी हमारा लाफ्टर अराउज होता है. सर फिलिप सिडनी के मुताबिक बेहतरीन ड्रामा वो होगा जिसमें दोनों, लाफ्टर भी हो और डिलाइट भी हो. वो एग्जाम्पल देता है हरक्यूलिस की. हरक्यूलिस एक बड़ा बहादुर और बहुत ताकतवर आदमी था और ये एक खूबसूरत औरत को पसंद करने लगता है. औरत कहती है कि मैं तब आपसे लव करूंगी जब आप उमन का लिबास पहने और साथ में निटिंग करें, स्वेटर बुनना जिसको कहते हैं. तो जब हम इसको स्टेज पे ये करते देखते हैं तो बहादुर आदमी को, जो कि ज़रा तलवार रखने वाला बंदा है, वो जब औरत के लिबास में आता है और निटिंग करता है तो हमारी लाफ्टर अराउज होती है. लेकिन जब हम इस बात पे सोचते हैं कि देखिए लव इंसान से क्या क्या काम करा सकता है, हम लव की नेचर को समझना शुरू करते हैं तो ये हमें डिलाइट देता है. ये लाफ्टर की मिसाल नहीं है. एक मरतबा अगर हम इसको फिर रिपीट कर लें, लंबा टाइम लेता है लेक्चर, लेकिन मैं लालच होती है कि इसको ख़त्म करें इस एक लेक्चर में. हमने पढ़ा सर फिलिप सिडनी की व्यूज़ ट्रेजिडी के बारे में और कॉमेडी के बारे में. तो ट्रेजिडी के बारे में उसकी व्यूज़ ये थी कि इसमें लैक ऑफ यूनिटीज़ नहीं होनी चाहिए, मिक्सिंग ऑफ कॉमेडी और ट्रेजिडी नहीं होनी चाहिए. और लैक ऑफ यूनिटी से मुराद तीन यूनिटी, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन था. ये तीनों होने चाहिए और कॉमेडी ट्रेजिडी को मिक्स नहीं करना चाहिए. इसकी थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी में पहली बात मिडिवल एज से ली गई है कि फॉल ऑफ टेरेंट के बारे में हो और सर्टेनिटी ऑफ लाइफ के बारे में हो. सेकंड, स्केलेजर से लिया गया है कि स्टेटली स्पीचेस होनी चाहिए. थर्ड, एडमरेशन और कमेजरेशन अराउज करें, मिंटर्नो से लिया गया है. कास्टलवेट्रो से लिया गया है तीन यूनिटीज़ की, यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम, एक्शन. और जो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लॉट है ये अरिस्टोटल से लिया गया है कि ये कंप्लीट होना चाहिए, होल होना चाहिए, बिगिनिंग मिडल एंड होना चाहिए. तो ये हमें इसकी कॉमेडी के बारे में उसका वो फ़र्क बताता है कि लाफ्टर और डिलाइट में फ़र्क है. उस वक्त की कॉमेडीज़ में सिर्फ लाफ्टर है जबकि ज़्यादा ज़रूरी डिलाइट है. तो ये हमें डिलाइट और लाफ्टर का फ़र्क बताता है और बताता है कि जो लाफ्टर है वो गैर हम आहंगी से पैदा होती है और डिलाइट हम आहंगी से पैदा होती है. ऐसा ड्रामा बहुत बेहतर होगा जिसमें ये दोनों हो. और वो एग्जाम्पल हमें देता है हरक्यूलिस की, जो एक बहुत बड़ा हीरो था और उसके ड्रामे में ये दोनों चीज़ें मौजूद थी. दैट्स इट फॉर द टाइम बीइंग. थैंक यू एंड गुड लक.